Yes, students, in this session we will discuss applications of dimension analysis or usage of dimension analysis. There are various applications of dimension analysis. First, to check the correctness of formula on principle of homogeneity. According to principle of homogeneity, if any formula is correct, then dimensions of left hand side is same as the dimensions of right hand side. This is called principle of homogeneity, or we can say according to principle of homogeneity, if two quantities are in addition or subtraction, they have same dimensional formula. तो बच्चों आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस और यूजेज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस. इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला एंड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. ये कहता है कि यदि कोई फार्मूला मेंशन है, कोई भी फार्मूला रिटर्न है और यदि वो करेक्ट है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम रहेंगी. देखिए कोई भी फार्मूला होगा, यदि F इक्वल टू ma है तो F फोर्स है तो ma भी क्या होगा, फोर्स. या ma फोर्स है, F भी फोर्स है, तो दोनों की डायमेंशंस भी क्या होंगी, सेम. सो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि अकॉर्डिंग if any formula is correct, then dimensions of left hand side is same as the dimensions of right. Yes, look numerical. Check the correctness of formula K equal to half mv square, where K kinetic energy, m mass, and v velocity. So look, answer given K equal to half mv square. We want to check the correctness of that formula. So if formula is correct, then dimensions of left hand side is same as the dimension of right hand side. Look at LHS left hand side kinetic energy. Dimension formula of kinetic energy is ml square e to the power minus 2. So dimension formula of left hand side is ml square e to the power minus 2. Now RHS, here RHS half mv square, m is the constant, m is the dimension, m is the mass, v is the velocity, and half is the dimensionless constant. So dimensionless constant have a dimension 1, m have dimension capital M, and velocity have dimension L t minus 1 and whole square. So m L square t to the power minus 2 RHS is, so RHS is also ml square t to the power minus 2. Then LHS is equal to RHS. So formula is correct. तो देखो बच्चों, क्वेश्चन है गिवन फार्मूले करेक्टनेस चेक करिए. काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, क्या K काइनेटिक एनर्जी, हाफ m मास, v वेलोसिटी. तो यदि फार्मूला करेक्ट है तो डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की सेम होंगी. लेफ्ट हैंड साइड क्या है, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml स्क्वायर टू द पावर माइनस 2. अब आइए राइट हैंड साइड क्या है, हाफ mv स्क्वायर, हाफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, हाफ इसका हाफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगी 1, मास की m, v की l t minus 1, v स्क्वायर है तो होल स्क्वायर. सिंपलीफाई किया ml स्क्वायर t टू द पावर माइनस 2. सो LHS इक्वल टू RHS. So formula is correct. Look, another numerical based on this application. Yes, look next numerical. Check the correctness of formula h equal to 2s cos theta upon r rho g, where h height, s surface tension, theta angle of contact, r radius, rho density, and g gravitational acceleration. So our target is to check the correctness of that formula. So given h equal to 2s cos theta upon r rho g. Now if formula is correct, then dimension of left hand side is same as the dimension of right hand side. So look, left hand side h is the height, dimension of height is L, so left hand side have a dimension L. Now look, RHS 2s cos theta upon r rho g. 2 is the number which is dimensionless, so 2 have dimension 1.
as surface tension, surface have dimension formula m t to the power minus 2, m t to the power minus 2 surface tension. Yes, and cos theta, theta is the angle, angle is the dimensionless, so cos theta is the dimensionless, dimensionless quantity have dimension formula 1. R, radius have dimension L. Rho, density, density have dimension formula ml to the ml to the power minus 3. G, gravitational acceleration have dimension formula L t to the power minus 2. So we put in place of 2 1, because 2 is the dimensionless, cos theta dimensional 1, surface dimension formula of surface tension m into t to the power minus 2, dimension formula of radius L, dimension formula of rho m L to the power minus 3, and dimension formula of gravitational acceleration L t to the power minus 2. Simplify, we get L. So RHS have dimension L, and left and LHS also dimension have L, so RHS equal to LHS. So formula is correct. Now look, next numerical based on this application. Now next numerical, in the given relation, the dimensional formula of, find the dimension formula of A and B. A and B is in this relation P plus A upon B square into B minus B equal to nRT, where P pressure and B volume. So look, is answer, look, given P plus A upon B square into B minus B equal to nRT. So in between V and B there is a minus sign. When between two quantity minus or plus sign is exist, then both have same dimension formula, because we have already stated that if two quantities are in addition or subtraction, they have same dimensional formula. So according to principle of homogeneity, is dimension of B equal to dimension of V. V is the volume have dimension L cube, so dimension of B equal to L cube. Yes, dimension of B equal to L cube. Now between P and A upon B square there is a plus sign, so when these quantities P and A upon B square in addition, then they have also same dimension formula. So dimension of A upon B square equal to dimension of P is, so A upon, we have a volume have dimension formula L cube, so L cube whole square equal to dimension formula of pressure is M L inverse T to the power minus 2. Now simplify, so A upon L to the power 6 equal to M L inverse T to the power minus 2. So A equal to is, write this formula in square bracket. So A equal to M L inverse T to the power minus 2 into L to the power 6. So dimension of A equal to M L to the power 5 T to the power minus 2. तो देखो बच्चों, इस न्यूमेरिकल में P हमें रिलेशन गिवन है P प्लस A अपॉन बी स्क्वायर इंटू बी माइनस बी इक्वल टू nRT, जहाँ P प्रेशर है और V वॉल्यूम.
इस एक्सप्रेशन में हमें ए और बी की डायमेंशंस कैलकुलेट करनी है, व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। वेयर तो देखिए गिवन p प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू एनआरटी। अब देखिए v और v के बीच में माइनस साइन है, जब दो क्वांटिटी सब्सट्रैक्ट या ऐड होती है तो उनके डायमेंशन सेम होते हैं, इसलिए v का जो डायमेंशन होगा वही b का होगा। तो डायमेंशन ऑफ b इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v, v is the volume, volume have dimensional formula L cube, so b equal to L cube, dimension of b equal to L cube। अब p और a अपॉन b स्क्वायर के बीच में प्लस है, जब प्लस है तो दोनों के डायमेंशन सेम होंगे, सो डायमेंशन ऑफ a अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b, सो a अपॉन b have a dimension L cube, so L cube whole square equal to mn inverse t minus 2, so L to the power 6 simplify mn to the power 5 into t to the power minus 2. This is the dimension of A. Now look another numerical based on this application. Now look another numerical based on application. Now look another numerical based on the principle of homogeneity or to check the correctness of formula application. Question 4, in the given relation find the dimension of A and B where p power x distance and t time. So look given p equal to a minus x square upon bt square. So according to principle of homogeneity, dimension of A equal to dimension of x square. X is the length have a dimension formula L, so dimension of A equal to L square. Now if look p equal to a minus x square upon bt square, according to principle of homogeneity, if this formula is correct, so dimension of left hand side means dimension of p equal to dimension of right hand side means dimension of a minus x square upon bt square. So dimension of a minus x square upon bt square equal to dimension of p. So a have dimension L square, x square have also dimension L square, so a minus x square also have dimension L square. S upon b into t is the time and dimension capital T, so t square equal to p power have dimension formula ml square to the power minus 3. Now so b equal to L square upon m L square t to the power minus 3 into t square. So b equal to L square cancel out, so 1 upon m into t to the power minus 1. So b equal to m to the power minus 1 into t. So dimension of b equal to m to the power minus 1 L to the power 0 into t. This is the dimension of b. So these are the numericals, some numericals based on the application to check the correctness of formula. Now next application. Now next numerical, conversion of unit from one system into another system of unit. This is the second application of dimensional analysis. तो बच्चों second application है conversion of unit from one system into another system of unit. Look the marker. Suppose the length of that marker is 12 centimeter. So 12 centimeter length of that marker is, look, length of marker is 12 centimeter. 12 centimeter can be write 0.12 meter and can be write 120 millimeter. So what you observe, when
unit is changed, then numerical value is also changed. But look, 12 cent. Suppose the length of that marker is 12 centimeter. So 12 centimeter is equal to 0.12 meter is equal to 120 millimeter. Means when unit is changed, numerical value is also changed, but their product is constant, which gives the value of given quantity. Value of given quantity remains same. Product of unit and numerical value change. तो बच्चों, कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम किस प्रिंसिपल वर्क करता है? ये इस प्रिंसिपल वर्क करता है. देखिए मार्कर है, मार्कर की सपोज लेंथ 12 सेंटीमीटर है, तो 12 सेंटीमीटर को हम 0.12 मीटर ले सकते हैं, 120 मिलीमीटर ले सकते हैं. तो आप क्या देख रहे हैं कि यदि 12 सेंटीमीटर 0.12 मीटर 120 मिलीमीटर, तो आप क्या देख रहे हैं कि यदि न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज, यूनिट चेंज कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो रही है, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट कांस्टेंट है. और न्यूमेरिक वो जो प्रोडक्ट है वो क्या बता रहा है? वैल्यू ऑफ गिवन क्वांटिटी. देखिए 12 सेंटीमीटर 120.12 मीटर एंड 120 मिलीमीटर क्या बता रहे हैं? लेंथ ऑफ दैट मार्कर. तो लेंथ तो फिक्स है. यदि आप न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर रहे हैं, यूनिट चेंज कर रहे हैं, तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन इनका प्रोडक्ट क्या बता रहा है? लेंथ ऑफ दैट मार्कर. मींस so what we conclude that numerical value unit in one system equal to numerical value and product of numerical value and unit in other system. Product, it means product of numerical value and unit always remain constant. Is what we conclude that for a given measurement, product of numerical value and unit remain constant. So look, numerical value n1 into u1 equal to m2 into u2. u1, suppose u1 unit have a m1 to the power a, l1 to the power b, t1 to the power c, and u2 have unit m2 to the power a, l2 to the power b, t to the power c. So n2 equal to n1 m1 upon n2 whole power a, l1 upon l2 whole power b, t1 upon t2 whole power c. तो देखो जो हमने कंक्लूजन लिया कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहना है? कांस्टेंट. इसी प्रिंसिपल पे लेगा. न्यूमेरिकल वैल्यू वन सिस्टम में इनटू यूनिट इन वन सिस्टम इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इन अदर सिस्टम इनटू यूनिट इन अदर सिस्टम. यूनिट कोई भी होगी, उसमें फंडामेंटल यूनिट्स होंगी, पावर्स होंगी. पावर्स हमें पता नहीं क्या है, तो हमने एलाइट कर लिया एबीसी पावर्स हैं. तो m टू द पावर a, l1 टू द पावर b, t1 टू द पावर c. व्हेन यूनिट इज चेंज बट unit change but powers remain same. So m to the power a, n to the power b, t to the power c. So n2 equal to n1 m1 upon m2 whole power a, l1 upon l2 whole power b, t1 upon t2 whole power c. Is this is the unit in one system equal to this is unit of other system. Numerical value and unit change but dimensions of unit remain same. Look, meter per second equal to centimeter per second, means power meter per second. In meter per second, what is the power on meter? 1. What is the power on second? -1. So and in centimeter per second, power on centimeter 1 and power on second -1. It means when unit for given quantity unit change in other system but their dimensions remain same. Yes, so n2 equal to n1 m1 to the power a, l1 to the power b, t1 upon t2 whole power c. We use this formula for the conversion. तो बच्चों इसका हम यूज करेंगे conversion of unit from one system to another system. Now look, one numerical convert value of 5 Newton into dyne. Conversion of value of 5 Newton into dyne. So look, given value is represented by n1. So n1 equal to 5 Newton. Newton is the SI unit of force. So this is the SI Newton is the SI unit of force. In SI unit, mass measured in kilogram. So m1 is 1 kilogram and length measured in meter. So l1 is 1 meter and time measured in seconds. So t1 equal to 1 second. And we want to value convert into dyne 5 Newton. Dyne is the CGS unit. So n2 we want to determine in CGS system mass measured in gram. So m2 equal to 1 gram, l2 equal to 1 centimeter
T2 equal to 1 second. Now Newton and dyne are the unit of force. So quantity is force. Force and dimension formula ml t to the power minus 2. So here what is the power on m1 and here what is the power on ma. So a equal to 1 and at L how much power 1 and here at how much power on L b. So b equal to 1 and here what is the power on T1 upon T2 C and here what is the power on T minus 2. So C equal to minus 2. So these are the powers value of A, B, C. Now relation N2 equal to N1 bracket M1 upon M2 whole power A into L1 upon L2 whole power B into T1 upon T2 whole power C. Is put these values. So N2 equal to 5 into 1000 gram upon 1 gram whole power 1 into 100 centimeter upon 1 centimeter 1 second upon 1 second whole power minus 2. तो देखो बच्चों, जब भी हमें कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम अनदर सिस्टम किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहना है. यस, तो न्यूमेरिकल वैल्यू ये है और यूनिट ये है किसी सिस्टम में, तो हमने ये n2 न्यूमेरिकल वैल्यू अनदर सिस्टम में, यूनिट अनदर सिस्टम में, तो n2 का फॉर्मूला ये आ गया. जब भी हमें कन्वर्जन करना होगा तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे. सिंपल सी चीज है. whenever we want to convert value of one system into another system dimensionally we use this formula. इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें n2 चाहिए तो हमें सारी वैल्यू चाहिए. तो n1 n1 m1 l1 t1 आर द गिवन वैल्यू और n2 m2 l2 t2 द वैल्यू इन अदर सिस्टम. सो लुक, हमारा क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ 5 न्यूटन इनटू डाइन. तो 5 न्यूटन क्या है, गिवन वैल्यू है, तो n1 हो गया 5 और न्यूटन ऐसा यूनिट होती है फोर्स की. जब भी ऐसा यूनिट में वैल्यू गिवन हो तो मास किस में लेंगे, ग्राम में. तो m1 1 ग्राम, l1 1 मीटर और t1 1 सेकेंड. जो गिवन वैल्यू होगी जिसे हमें कन्वर्ट करना है वो सारी 1 से शो होंगी 1 सेकेंड. और डाइन हमें 5 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है. सो n2 क्या है, क्वेश्चन मार्क. डाइन इज द CGS यूनिट. व्हेनेवर टू कन्वर्ट CGS यूनिट, मास इन ग्राम, लेंथ इन सेंटीमीटर एंड टाइम इन सेकेंड. नाउ what is the quantity? 5 Newton is the quantity value of force. So quantity is force. Quantity क्या है, force है. force का डायमेंशन होगा mn t to the power minus 2. n पे जो पावर होगी वो 1 से दिखाएंगे तो a1, l पे जो पावर होगी वो b से दिखाएंगे तो b1 और c पे जो पावर होगी -2 से c -2. अब कन्वर्जन के लिए ये फॉर्मूला हमने ये वाला फॉर्मूला यूज होना है. तो ये फॉर्मूला हमने मेंशन कर लिया, n2 into n1 m1 upon n2 whole power a, l1 upon l2 whole power b, t1 upon t2 whole power c. वैल्यू रख दी 5 into 1000 ग्राम upon 1 ग्राम, 100 सेंटीमीटर upon 1 सेंटीमीटर, 1 सेकंड upon 1 सेकंड whole power -2. देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल. तो ये आ गया. इस यदि आप सॉल्व करें तो ये आ गया आंसर. n2 इक्वल टू 5 into 1000 into 100. तो n2 इक्वल टू 5 into 10 to the power 5. 5 into 10 to the power 5. Yes. Now next numerical, convert value of 10 joule into erg. So joule is the SI unit, 10 joule is the SI unit of work or energy. So n1 given value are represented by 1. So n1 10 joule. Joule is the SI unit. Whenever value given in SI unit, then m1 taken kg, l1 taken meter, and t1 taken second. And now we want to convert 10 joule into erg. Erg is the CGS unit of work. And whenever we want to calculate value in CGS system, then n2 question mark in CGS system
if we want to obtain the value, then M2 1 gram, L2 1 centimeter and T2 1 second. And if given value is that question, if question is that convert 10 arg into joule, then M1 L1 T1 1 gram 1 centimeter and 1 second, and M2 1 kg, L2 1 meter and T2 1 second. Then value are interchange. Now quantity work have dimension formula ml square t to the power minus 2. So A equal to 1, m have power 1, l have power 2, so B equal to 2 and C equal to minus 2. So formula N2 equal to N1 bracket M1 upon M2 whole power A into L1 upon L2 whole power B into T1 upon T2 whole power C. Is we put the values, so N2 equal to 10 into 1000 gram upon 1 gram whole power. So A equal to 1, B equal to 2, C equal to 2, and apply the formula N2 equal to N1 into M1 upon M2 whole power A, L1 upon L2 whole power B, T1 upon T2 whole power C. Put the value of N1 to 10, M1 1000, M2 1 gram, L1 100 centimeter, L2 1 centimeter whole power 2, and T1 1 second, T2 1 second whole power minus 2. Second cancel, centimeter cancel, 1 gram cancel. So N2 equal to 10 into 1000, 100 square. So 100 into 100. So N2 equal to 478, 10 to the power 8. So this is the value N2 10 to the power 8 arc. So 10 joule convert into arc. In arc, value of 10 joule is equal to 10 to the power 8 arc. Thus we do discuss some applications of dimension analysis. In next turn we will discuss other applications of dimension analysis and its limitation. Thank you.